Hello students, in this video lecture I will explain to you how to prepare a flexible budget with the use of a format of a cost sheet. Means by following the format of a cost sheet we can prepare a flexible budget. That's what I wanted to show you with the help of this illustration. Now let's read the illustration first. The expenses budgeted for production at 100% capacity of Infosys Limited Islampur are given below. Now this is the cost data of this company under 100% capacity. That value of direct, the budgeted figure of direct material for 100% capacity is 6 lakh. Variable works overhead figure is 2 lakh. The budgeted figure of basic wages at 100% capacity is 2 lakh. The budgeted figure at 100% capacity of fixed production overheads is 80,000 rupees. Likewise, 40,000 of productive expenses, 40,000 administrative expenses, 1,20,000 selling overheads, and 60,000 distribution on cost. Here, we are told to prepare a flexible budget for the production at 60% capacity and 80% capacity, showing separately prime cost, works cost, cost of production, and cost of turnover. So here we have to prepare a flexible budget, and for as far as this problem is concerned, we are going to follow the format of a cost sheet, because the prime cost, work cost, cost of production, cost of turnover are the part of a cost sheet. So it is better for us to consider a format of a cost sheet for the preparation of flexible budget as far as this problem is concerned. In my previous video, I had used the logic of classification of cost. Means I'm to say the base of classification of cost, and on the basis of this base, that is classification of cost, I had prepared a budget in the previous video. But in this video, I'll be using the cost sheet for the preparation of flexible budget. Okay, but for before that, it is necessary for us to classify all these cost data among the cost sheet content, among the headings of cost sheet, that is prime cost, works cost, office cost, or selling and distribution cost. Okay, the direct material, we all know that it is a part of a prime cost as a direct material. So prime cost, PC means prime cost. Next is variable works overhead. Works means factory, so it is a part of work cost or factory cost. So basic wages, again prime cost. Direct wages is the most important part of prime cost. Next is fixed production overheads. Now production overheads means fixed cost, I mean to say works cost, ये जाएगा works cost के अंदर. So works cost और factory cost. Now उसके बाद next है productive expenses marginal. It is direct expenses, so it will go under prime cost. So under the heading of prime cost, we are going to consider these productive expenses. Next है administrative expenses. ये होगा office and administration cost. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट OA. उसके बाद है सेलिंग ओवरहेड्स, जो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के नीचे. उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कॉस्ट, वो भी हम कंसिडर करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के नीचे अंदर. ओके, now here I have already prepared the format. Let me show you the format of it. Now this is the format, I have already prepared it. Here I have mentioned the name of the company. Now normal activity, and the figure is missing here because at 100% capacity, what is the budgeted quantity of output, that is not mentioned anywhere in the problem, so I will leave it blank. But the capacity mentioned in the problem is 100, because we have the data of 100% capacity, and we are told to prepare a budget of 60%, 80%. So here I have three columns: 60%, 80%, and 100% capacity. Now as far as prime cost is concerned, we all know the format. First we have to consider the direct material. In direct material we will add direct wages, then we will add their direct expenses to get the prime cost. Then in the prime cost we will add factory overheads. That's how we will get the works cost or factory cost. And after that, in works cost or factory cost, we will add office and administrative overheads expenses, I mean to say. Then we will get the cost of production after adding the office and administration overheads in works cost. Then in cost of production we will add selling and distribution overheads, and we will get cost of turnover or cost of sales, or total cost of production. Okay, then let's prepare the flexible budget. The first is direct material.
So here we have the figure of direct material, that is 6 lakh rupees. So budgeted figure of direct material at 100% capacity is 6 lakh rupees. So here I will mention 6 lakh rupees. अब आपको पता ही है कि डायरेक्ट मटेरियल की जो वैल्यू है और डायरेक्ट मटेरियल वैल्यू जो भी कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, उसका जो नेचर है वो वेरिएबल है, इट इज़ वेरिएबल कॉस्ट, एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट वैरी विद द चेंजेस मेड इन द लेवल ऑफ आउटपुट. इट इंक्रीजेस when output increases, it decreases when output decreases. अभी यहाँ पे the budgeted figure of direct material at 100% capacity is 6 lakh rupees. So how much will it be at 80%? This is the question. So here I'll write at 100% capacity, the budgeted cost of material, that is direct material, is 6 lakh. So how much will it be at 80% capacity? And this is the cross question, and this is the question, and here we have to simply make a cross calculation. So in 80 into 6 lakh divide by 100, so the answer is 4 lakh 80,000. Therefore the budgeted value of direct material at 80% capacity will be 4 lakh 80,000. अभी ये क्रॉस कैलकुलेशन का एक लॉजिक तो आपको पता ही चला होगा कि क्रॉस कैलकुलेशन करके अपन निकाल सकते हैं. अभी मुझे आपको मैंने जो जैसे आपको बोला था, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है वो वेरी करती है. जैसे ही प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगी, और जैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होगा, मतलब देखो यहाँ पे 100 से हमने 80 का लेवल देखा, तो जो भी डायरेक्ट मटेरियल का वैल्यू है वो कम हो गया है. नाउ व्हाट इज द चेंज इन द लेवल ऑफ कैपेसिटी? 20%, बट दैट 20% as far as value is concerned is equal to rupees 1,20,000. Now see, यहाँ पे देखो जो बजटेड फिगर ऑफ डायरेक्ट मटेरियल है वो 6 लाख है 100 के लिए, लेकिन 80 के लिए वो है 4,80,000. मतलब जो भी 20% का चेंज हो रहा है, उस 20% चेंज के कारण जो डायरेक्ट मटेरियल का वैल्यू है दैट इज ऑल्सो चेंजिंग विद अ सम ऑफ रुपीज 1,20,000. और इसका और एक लॉजिक है. अभी इसका मतलब यहाँ पे हम कैसे निकाल सकते हैं? अभी यहाँ से देखो 80 से प्रोडक्शन 60 पे जा रहा है, मतलब फिर से 20% का डिप है इन द कैपेसिटी, और वो 20% का डिप इज इक्वल टू 1,20,000. मतलब ये 480 से हम 1,20,000 को माइनस करेंगे, देन वी विल गेट अ हियर फिगर ऑफ 3,60,000. तो मतलब द बजटेड फिगर ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एट 60% कैपेसिटी विल बी रुपीज 3,60,000. और एक लॉजिक है यहाँ पे देखो, 100% का फिगर है हमें. अगर अपन 80% का 6 लाख निकालते हैं, 80% ऑफ 6 लाख इज 4,80,000. अगर आप कैलकुलेटर से 60% का 6 लाख का 60% निकालते हैं, देन द वैल्यू विल बी 3,60,000. या तो फिर क्रॉस कैलकुलेशन करो, और एक बार क्रॉस कैलकुलेशन करने के बाद ये जो भी डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ जो भी डिफरेंस आ रहा है वैल्यू के अंदर बिकॉज ऑफ चेंज इन द लेवल ऑफ कैपेसिटी, उसके हिसाब से निकालो. या फिर यहाँ पे एक लॉजिक कौन सा यूज कर सकते हैं अपन, यहाँ पे 100% का डेटा है तो सिंपली 80% का निकालो. 6 लाख का 80% 480 है, और 6 लाख का 60% 360 है. ऐसे भी कर सकते हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट है वी हैव टू ऐड हियर बेसिक वेजेस. अभी हम लोगों ने ये तो कॉस्ट कंसिडर कर लिया, अभी हमें बेसिक वेजेस कंसिडर करने हैं. यहाँ पे देखो प्राइम कॉस्ट है, बेसिक वेजेस भी है. बेसिक वेजेस को भी कंसिडर कर लेंगे. एट 100% कैपेसिटी द वैल्यू ऑफ बेसिक वेजेस इज 2 लाख. अभी आप दो लॉजिक यूज कर सकते हो, या तो फिर परसेंटेज वाला यूज करो या फिर क्रॉस कैलकुलेशन वाला करो. क्रॉस कैलकुलेशन का क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, अभी 100% को कितना है 2 लाख है वैल्यू ऑफ बेसिक वेजेस. budgeted figure of basic wages at 100% capacity is that much. So how much will it be at 80% capacity? 1,60,000. या तो फिर ऐसे क्रॉस कैलकुलेशन करने के जगह पे यू कैन डू वन थिंग, डायरेक्टली क्या करो 80% निकालो 2 लाख का, वो भी इतना ही आएगा 1,60,000. या यहाँ पे 60% 2 लाख का कितना है 1,20,000, तो यहाँ पे 1,20,000 आएगा. द बजटेड फिगर ऑफ वेजेस एट 60% कैपेसिटी विल बी रुपीज 1,20,000. या तो फिर एक लॉजिक है अपना, ये लॉजिक है. यहाँ पे देखो वैल्यू जो बेसिक वेजेस की वैल्यू है 20% इज इक्वल टू 40,000. मतलब अगर 20% का इंक्रीज होगा परसेंटेज में कैपेसिटी में, या फिर डिक्रीज होगा, तो वैल्यू भी आपकी इंक्रीज और डिक्रीज होगी. कितने से होगी 40,000 से होगी. देखो यहाँ से जैसे आप 20% से कम कर रहे हो 100 से 80, आपका वैल्यू भी 40,000 से कम हो रहा है. यहाँ से जैसे आप कम हो, आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर आपने कम किया 80 से 60, आपका वैल्यू भी 40 से कम होगा 1,20,000. अब इसके बाद नेक्स्ट है वी हैव टू कंसिडर नाउ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट इज प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस मार्जिनल. प्रॉब्लम के अंदर क्या है, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस मार्जिनल, उसका वैल्यू 40,000, तो उसको यहाँ पे भी कंसिडर करूंगा एंड in 100% capacity column. So 40,000 rupees. Now what is 80% of 40,000? 32,000.
उसके बाद व्हाट इज 60% ऑफ 42,000? 24,000। चलो मैं क्रॉस कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे, मैंने परसेंटेज का लॉजिक यूज किया लेकिन क्रॉस कैलकुलेशन करके देखेंगे। एट 100% कैपेसिटी व्हाट इज द वैल्यू? 40,000। तो 80 को कितना आ रहा है? 32,000 आ रहा है। और 60 को कितना आएगा? 24,000 आएगा, राइट। अभी प्राइम कॉस्ट निकालेंगे, प्राइम कॉस्ट निकालना है मतलब ये तीनों का एडिशन करना पड़ेगा। सो 5,04,000 prime cost, budgeted prime cost at 80% capacity 6,72,000, budgeted cost, budgeted prime cost at 100% capacity it will be 8,40,000। अब इसके अंदर हमें ऐड क्या करना है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। हमारे पास टू टाइप्स के फैक्ट्री ओवरहेड्स है, देखो ये वर्क्स कॉस्ट, ये वर्क कॉस्ट। पहली कौन सी है? वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड है, उसका वैल्यू कितना है? 2,00,000 रुपीज़। तो 2,00,000 रुपीज़ को आई विल शो हियर फर्स्ट इन द कॉलम ऑफ 100% कैपेसिटी यहाँ पे। अब इसका नेचर क्या है? टाइटल के अंदर ही दिया है, वेरिएबल है। ये जो वर्क्स ओवरहेड है ना 2,00,000 रुपीज़ के, इसका नेचर कैसा? वेरिएबल है। इसका मतलब क्या है? वेरिएबल ओवरहेड है। इसका मतलब ये है कि जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा ये वेरिएबल ओवरहेड भी बढ़ेंगे, और जैसे प्रोडक्शन कम होगा ये वेरिएबल ओवरहेड भी कम होंगे। हाँ, एट 100% कितना है? 2,00,000 है, तो 80% कितना होगा? 160। 60% कितना होगा? 120। यहाँ पे ऑलरेडी हमने 2,00,000 के लिए कैलकुलेशन करके रखे हैं, तो यही मैं कॉपी करके यहाँ पे दिखा दूंगा, लेकिन आपको फिर से कैलकुलेशन करना है, आप कर सकते हो। मैं आपको आपके लिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखो यार 100% कैपेसिटी कितने वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड है? बजटेड फिगर कितनी है? 2,00,000 रुपीज़ है। तो 60% की कितनी कितनी होगी? कितनी है? 1,20,000। यहाँ पे 1,20,000 ऑलरेडी दिखाया मैंने। तो 80 के लिए बजटेड फिगर कितनी होगी? तो इतनी होगी 1,60,000। Now the next is we have one more factory overheads here, uh, that is fixed production overheads. Value is 80,000. Now it is fixed. In the title itself it is mentioned that the value is fixed, and we all know the property of total fixed cost, that it always remains constant, it doesn't change. So here in the column of 80% and in the column of 60%, I will show the same amount of fixed production overheads. I have shown the same amount of fixed production overheads. Understood? Because it remains fixed. Fixed cost in totality always remains fixed. Now let's calculate the prime cost, sorry, works cost. For that, in prime cost we have to add the factory overheads. Now the budgeted works cost at 60% capacity is 7,04,000. Budgeted fixed cost at 80% capacity is 9,12,000, and the budgeted fixed cost at 100% capacity is 11,20,000. Now in this cost we have to now add, as per the format of cost sheet, office and administration overheads. So what is the value of office and administration overhead? Is 40,000. So here I will mention rupees 40,000. Now in the title itself, of administration expenses, there is a word rigid. See this word rigid. Rigid means what? Fixed, constant. Rigid means what? Fixed constants. Therefore, the nature of administrative expenses here in the problem is fixed. And we all know the property of fixed cost, that in totality, total fixed cost always remains constant. Now, after having that cost, we can now calculate the cost of production. And for that, we need to add the office and administration overheads in the work cost. So I'll add here the administrative expenses rigid with the office and administration, sorry, with work cost. Then I'll get here, I have got here the value of what? Cost of production, that is budgeted cost of production at 60% capacity. Same way, the budgeted cost of production at 80% capacity is 9,52,000, and at 100% capacity the budgeted cost of production is 11,60,000. Now after that we have to add now selling and distribution overheads. Now here we have two types of selling and distribution overheads. Now the first is selling overhead, so I'll consider first selling overhead. But here the 10% is fixed. The 10% is fixed. If 10% is fixed, it means the remaining 90% is variable. So here look, for your simplicity, I'll remove that part from here. Okay. Now the value of selling overheads in the problem. The value of selling overheads in the problem is 1,20,000. But under the capacity, under 100% capacity, so always first mention the data here under 100% column, because we have the data available in the problem at 100% capacity. So here we have to mention that figure first. The figure is 1,20,000. So here I'll write first, I'll type first 1,20,000. But as per the problem,
out of that 1,20,000, 10% part is fixed. Means what is 10% of 1,20,000? 12,000. So 12,000 is fixed part, and at the same time the remaining the remaining value is, and that is rupees 1,08,000. 8,000, and it is variable. 1,08,000 is variable. I can now I'll prove to you. Now look here, 1,20,000 into into 90%. So 90% ऑफ 1,20,000 इज 1,08,000. और यहाँ पे बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्या दिखा है प्रॉब्लम के अंदर हमें कि सेलिंग ओवरहेड्स है जिसकी वैल्यू 1,20,000 है, तो यहाँ पे मैंने 1,20,000 दिखा दी, लेकिन वो 1,20,000 के 10% फिक्स्ड है. अगर 10% फिक्स्ड है तो इसका मतलब क्या है, बाकी की जो 90% है वो वेरिएबल है. तो यहाँ पे देख लो 12,000 एंड 1,08,000, लेकिन ये डेटा हमें 100% कैपेसिटी के अंदर दिया है, तो हमें उसे 100% कैपेसिटी के अंदर ही दिखाना पड़ेगा. सो हियर आई विल शो फर्स्ट 12,000 fixed part and then the variable part. Okay, अभी let me show. अभी यहाँ पे देखो, हम सबको मालूम है कि जो 12,000 है फिक्स्ड है, and the property of fixed cost we know that total fixed cost always remain constant. अभी यहाँ पे देख लो कि 100% कैपेसिटी के टाइम, जहाँ यहाँ पे 100% जो है, यहाँ पे 100% पे जो वेरिएबल पार्ट ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स है वो है 1,08,000. 1,08,000 100% कैपेसिटी, जहाँ 100% कैपेसिटी के ऊपर जो वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स है वो है 1,08,000. अभी क्वेश्चन बनता है कि 80% के लिए कितना होगा, तो कितना होगा, 86,400 होगा. 86,400 होगा. तो फिर 60% को कितना होगा, तो 60% को 64,800 होगा. 64,800 होगा. देखो 60 और 80 समझ में आया. और एक अपना लॉजिक है. लॉजिक क्या है कि जो वैल्यू का डिफरेंस है वो सेम रहने वाला है. देखो यहाँ पे कितना है अपना 1,08,000, एंड उसमें से अगर मैं माइनस करता हूँ इस 86,400 को, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 21,600 का. मतलब जैसे ही प्रोडक्शन आपका 20% से कम होगा, आपका जो वेरिएबल कंपोनेंट है ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स वो भी कम होने वाला है 21,600 से. यहाँ पे देख लो 64,000. अभी देख लो यहाँ पे जैसे प्रोडक्शन 80 से 60 हो रहा है, जैसे प्रोडक्शन 80 से 60 हो रहा है, आपका वैल्यू भी 21,600 से कम होने वाला है. देखते होता है या नहीं होता है. देखो यहाँ पे इज इक्वल टू 86,400 से अभी 20% से प्रोडक्शन अपन कम कर रहे हैं. 80% के लिए कितना वैल्यू है, 86,400. वहाँ से प्रोडक्शन कम करके अपन 60% को आ रहे हैं. तो जैसे अपन 60% को आएंगे, जो वैल्यू है, जो वेरिएबल वैल्यू है, मतलब जो वेरिएबल पार्ट है सेलिंग ओवरहेड्स का, वो भी कम होगा बाय 21,600. देखते हुआ या नहीं हुआ. देखो यहाँ पे भी 64,800 है, यहाँ पे भी 64,800 है. सो इट मीन्स it is right. Now distribution on cost, the last part, distribution on cost, वो कितना है, वो प्रॉब्लम के अंदर है 60,000. चलो यहाँ पे मैं 60,000 दिखा देता हूँ. 60,000, और वो जो 60,000 है ना, उस 60,000 में से 80% वेरिएबल है. अगर 80% वेरिएबल है, इसका मतलब 20% फिक्स्ड है. तो व्हाट इज 20% ऑफ 60,000, 12,000 होगा. और अगर तो बाकी का जो 48,000 है वो फिर क्या है, वेरिएबल है. या तो फिर ऐसे कर लो, कैलकुलेट 80% ऑफ 60,000, यू विल गेट द सेम फिगर, दैट इज 48,000. अभी हमें मालूम है कि नाउ वी हैव दिस फिगर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट एट 100% कैपेसिटी. दिस आर द बजटेड फिगर्स एट 100% कैपेसिटी. तो यहाँ पे पहले दिखा दो 100% कैपेसिटी के अंदर the fixed part of distribution cost is 12,000 and the variable part is 48,000. Now we all know the property of fixed cost 12,000. It is going to remain constant. It will remain constant. अभी 48,000 का भी करना है हमें. तो अभी चलो 48,000 at 100% कैपेसिटी. अगर 48,000 at 100% कैपेसिटी है तो 80% के लिए कितनी होगी, नो 60 का लिए मिला इधर, तो 80 का करेंगे पहले. तो 80 के लिए कितनी है, 38,400. कितनी है, 38,400. तो यहाँ पे मैं 38,400 दिखा देता हूँ पहले. And at the same time the budgeted variable distribution on cost, variable part of distribution on cost at 60% capacity
विल बी 28,800। यहाँ पे भी मैंने लिख लिया, टाइप कर दूंगा मैं 28,800। या तो फिर जो भी अपना लॉजिक है, मतलब 20% से अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो वैल्यू कितने से कम हो रही है, देखो 48,000 at 100% के लिए, और 80% के लिए कितनी है वो 38,400। मतलब वैल्यू कितने से कम हो गई अपनी 9,600 से। जैसे आप प्रोडक्शन 80 से 60 को करोगे तो ये 9,600 से कम होनी चाहिए फिगर, देखते देखते हुई है नहीं हुई है। So from 38,400 if I deduct 9,600 तो 28,800 ही आना चाहिए, उतना ही आया 28,800। तो इसका मतलब अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। नाउ लेट्स कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ टर्नओवर। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल, वी हैव टू ओनली ऐड the cost of production. I mean to say we have to add the selling and distribution overheads with cost of production. If you add these two figures, cost of production and selling and distribution overheads, we will get the cost of turnover. तो कितनी है, 8 budgeted cost of turnover at 60% capacity is 8,61,600. Now budgeted cost of turnover at 80% capacity is 11,800, and budgeted cost of production at 100% capacity is 13,40,000। मतलब अगर 100% कैपेसिटी से प्रोडक्शन आप करोगे तो यहाँ ये आपका बजट है, बट बजटेड कॉस्ट है, टोटल बजटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। So I hope you have understood how to prepare a flexible budget with the help of uh, by using the format of cost sheet. अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आपके रेफरेंस के लिए। ओके, थैंक यू।